Good morning, everyone. Good morning. Welcome, guys. Welcome. आ जाइए फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए. कम ऑन सर. आज कल हमने किस चीज का रिवीजन कर लिया सर? प्री इंडिपेंडेंस. आज आई नो थंबनेल में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया सर. आज क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस. आज प्री नहीं है, आज क्या है? पोस्ट है. राइट. प्री इंडिपेंडेंस हमने कल देख लिया था. आज रहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस. राइट. आ जाइए. आज है पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री नहीं. चलिए फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए. हाय हाय सुशीला बेटा. गुड मॉर्निंग गौरव. गुड मॉर्निंग. चलिए आज हम देखेंगे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990. सर ये पीरियड में इकोनॉमी के क्या हाल रहे, ठीक है, क्या हाल रहे, कैसे हमने रिकवर किया सारी चीजों से ना, and what were the different reforms that we had to take in order to achieve our goals. Right. चलिए good morning now. My name is Saurabh Jaiswal. I'll be your educator for economics. Let's crack your 12 CBSE, guys. A very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts, and we've been teaching at 11th, 12th, and as well as in C Foundation. And it's been 2 years, and in this 2 years, one thing has always remained constant. That is our technique. Okay, that is our technique, our approach towards learning. That is always conceptual learning. That is always that is always conceptual learning, meaning the logics. क्या? Logics. किस पे ध्यान देने हैं? Logics पे ध्यान देने हैं. Alright. चलिए. Now, if you are new to Unacademy and you don't know कि Unacademy क्या है, I'll tell you in a very brief, one line. Unacademy is an online learning platform where you can come and learn each and every subject that you have, okay, all under one roof by various educators. आप Unacademy के resources का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो. क्या? Unacademy के resources का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो either by getting a subscription, ठीक है, or by watching our special classes. ठीक है. I highly recommend getting a subscription because there are various benefits. और इसे आप क्या समझे? इसे आप अपनी ट्यूशन फीस समझे. Right? ये क्या है गाइस? ये है आपकी ट्यूशन फी. ऑलराइट. सो बेनिफिट्स क्या है सर? बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो यू गेट डेली लाइव क्लास. सो सारी क्लासेस कैसी रहेगी? लाइव रहेगी. कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस का झंझट नहीं रहेगा. नो रिकॉर्डेड क्लासेस ना, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नो रिकॉर्डेड क्लासेस, ओनली लाइव क्लासेस. ठीक है. लाइव क्लासेस में देखिए आप तुरंत ही तभी के तभी हमसे क्या कर सकते हैं? इंटरैक्ट कर सकते हैं. नाउ यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, अभी भी लाइव हो रहा है. ऐसा डिफरेंस क्या है? राइट. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसा है सर, यूट्यूब पे कभी कभी लैग आ जाता है. ठीक है. कभी कभी क्या लैग आ जाता है एंड माय एक्शंस, ठीक है,
एंड योर क्वेरी, सर उसमें काफी 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स का लैग रहता है यूट्यूब में, एंड दैट इज वेरी वेरी मच जब हम एक फ्लो में जाते हैं। ऑलराइट, जब हम एक फ्लो में रहते हैं, फ्लो में रहते हैं तो क्या सर, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे कम्युनिकेशन में कोई लैग ना रहे, एंड दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कहाँ, प्लेटफॉर्म पे। देन फर्दर से लाइव क्लासेस के साथ साथ होते हैं लाइव पोल्स। लाइव क्लासेस के साथ साथ क्या होते हैं, लाइव पोल्स। नाउ व्हाट आर लाइव पोल्स? Live polls are your test towards your conceptual learning. सर नॉलेज टेस्ट भी तो करना पड़ेगा साथ साथ, राइट? नॉलेज को टेस्ट भी तो करना पड़ेगा साथ साथ, है कि नहीं? नॉलेज को टेस्ट कैसे करेंगे सर? नॉलेज को टेस्ट करेंगे थ्रू लाइव पोल्स एंड क्विजेस, थ्रू लाइव पोल्स एंड क्विजेस। जस्ट अ सेकंड गाइस। सो आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं दैट हाउ यू आर परफॉर्मिंग, ठीक। डाउट सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। ये सब कहाँ, ये सब है सर अंडर अ प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। देन सर एक और आता है आइकॉनिक, ठीक है, एक और आता है आइकॉनिक। प्लस में और क्या क्या, प्लस में और सिर्फ इतना ही है क्या? नहीं, प्लस में और क्या क्या है सर? अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेस, ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेस। देन आइकॉनिक इज वेरी पर्सनल, ठीक है, अ वेरी पर्सनल लेवल सब्सक्रिप्शन, एक वन टू वन इंटरेक्शन पे बेस्ड है। सो we the mentors will become your personal coach। आपकी पर्सनल मेंटरिंग भी होगी, ऑलराइट। तो डाउट सेशंस भी कैसे रहेंगे? एक्सक्लूसिव, ऑलराइट, सॉरी गाइस, डाउट सेशंस भी कैसे रहेंगे? एक्सक्लूसिव रहेंगे। नाउ इन सब के साथ साथ, इन सब के साथ साथ देयर विल आल्सो बी कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स, सो दैट आपकी जो हार्डवर्क है, ठीक है, वो चीज कम्युनिकेट हो पाए। एंड आइकॉनिक में सारे प्लस के बेनिफिट जो भी ऊपर थे, ये सब क्या थे, ये सब प्लस के थे, आइकॉनिक में वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। सो दीज आर द वेरियस benefits that you get on getting an Unacademy subscription, be it plus or iconic। now अब क्या, सिंपली आपने ऐप डाउनलोड करना है। सिंपली क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, बी इट प्ले स्टोर, आई स्टोर, जो भी है, जाइए सर्च करिए Unacademy लर्निंग ऐप, राइट। सर्च फॉर Unacademy लर्निंग ऐप, सर साइन इन करिए, ठीक है। सेट योर गोल, प्लस में जाइए, गोल सेट करिए। हमारा गोल क्या रहेगा? हमारा गोल रहेगा 12 CBSE। हमारा गोल क्या है गाइस? हमारा गोल है 12 CBSE। वेरी गुड। then then simply you just have to choose your appropriate subscription now। तो guys जो 11th में है बच्चा, आप अगर 11th में हो तो these are the variants, ठीक है। if you are in 11th these are the variants, if if you are in 12th these are the variants। अब 12th में सर एक और आ गया है 1 month वाला भी, ठीक है। 1 month is 3000। इधर आ जाइए राइट हैंड साइड में,
ठीक है। 1 मंथ वाला, 1 मंथ वाला इज कितना, 3000. ऑलराइट, सो यू कैन चूज 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स, जो भी सही लगे, जो भी सही लगे आपको, यू कैन चूज दैट. ठीक है, अप्लाई दिस कोड SAJYT, बस ये कोड अप्लाई कर देना है. सर, ये कोड अप्लाई करने से क्या होगा, आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा. सीधा सीधा क्या, सीधा सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा. फिर हमें जो भी जो भी सब्सक्रिप्शन था वो चूज कर लेना है, बी इट 1 मंथ और 3 मंथ, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स. आई वुड रिकमेंड go for 1 or 3. What is my recommendation? Take a 1 month or 3 months subscription. This is my recommendation. और इसी तरीके से सर आइकॉनिक, हाँ आइकॉनिक, आइकॉनिक के लिए भी टाइम नहीं बचा. ठीक है, बट इफ यू वांट यू कैन स्टिल गेट इट. ठीक है, चेकआउट के टाइम पे while selecting apply this code so that you get a 10% off. राइट, बहुत बढ़िया. ना एक नीचे, नीचे क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है. वो किसकी है, वो एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है. ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसमें सारी अपडेट्स आ जाते हैं हमारे 12th क्लास, ये 12 CBSE के जो भी क्लासेस हो रही है उनके, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट अकाउंट्स, बी इट बिजनेस स्टडीज, सारे. और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस. हाँ, हम आ जाते हैं हमारे रिविजन पे. हम आ जाते हैं किस पे, हम आ जाते हैं हमारे रिविजन पे. हाँ, अभी तक अभी तक हमने प्री इंडिपेंडेंस तो देख लिया है. हमने क्या देख लिया, प्री इंडिपेंडेंस. सर रिवीजन भी कर लिया है उसका, प्री इंडिपेंडेंस का रिवीजन भी हो चुका है एंड सब पूरा चैप्टर भी. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस का, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने पढ़ लिया है, आज रिवीजन करेंगे. राइट, आज क्या करने वाले हैं, आज उसका रिवीजन करने वाले हैं. ठीक है, यस सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओहो, सर आवाज देख रहे हैं आप, आवाज देख रहे हैं, पंछियां गुनगुना रहे हैं. वाह, क्या बात है, क्या बात है. सर नेचर इज हीलिंग. थैंक यू. चलिए, हाँ, हम कैसे जाने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. सबसे इम्पोर्टेंट, बिफोर प्रोसीडिंग विद द रिविजन, दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट रिविजन. ऑलराइट, बिकॉज इसे हमने एक कहानी के जैसे देखना है, बिकॉज इट इज अ स्टोरी. ठीक है, इट इज अ चैप्टर बट आप इसे एक कहानी के जैसे समझिए. इट इज अ स्टोरी which takes you down to a lane during the post-independence period. All right, during what? During the post-independence period. तो आपने ये सारी चीजें किस हिसाब से देखनी है सर. जस्ट इमेजिन कि आप एक स्टोरी सुन रहे हैं कि what all happened and how was the solution being given for the various problems. ठीक है, बस ये दो चीजें ध्यान रखते हुए आपने रिविजन के साथ प्रोसीड करना है. ठीक है, जहां भी डाउट आता है बच्चा, जहां भी डाउट आता है आप पॉज करिए, थोड़ा वापस से रिमाइंड करिएगा. ठीक है, डाउट आया पॉज करके रिमाइंड करिए, वापस से उसे एक बार देखिए. ठीक है, एंड
एंड अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ये अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहाँ पे यू कैन ऑल्सो मैसेजेस, यू कैन सर्च फॉर गोइंग टू द फ्री क्लास और स्पेशल क्लास सेक्शन। ठीक है, वहाँ पे सर्च करें सौरभ जायसवाल के लिए। ठीक है, टैप करना ऑल एजुकेटर्स पे, आपको टॉप पे सर मेरा नाम दिखेगा, मैं देखूंगा। आपने सिंपली सिंपली क्या करना है सर, प्रोफाइल विजिट करके मैसेज करना है इफ यू हैव एनी डाउट्स। ऑलराइट, बट आई डोंट थिंक आप लोगों को डाउट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाउ ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त को हमें क्या मिला, हमें मिला इंडिपेंडेंस। फाइनली वी वर फ्री एंड वी वर masters of our own destination after 200 years of rule। ठीक है, 200 साल के राज के बाद हम फाइनली 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए एंड हमारी इकोनॉमी अब हमारे हाथों में आई। ठीक है, नाउ नाउ सबसे बड़ा काम हमारे लीडर्स के हाथ में वो था, टू रीबिल्ड द इकोनॉमी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे क्रूशियल वर्क हमारे लीडर्स के हाथ में ये था, टू रीबिल्ड द इकोनॉमी। Right. So the leaders of independent India had to decide among many things that what should be the type of economy that we should follow so that there is welfare of people. Okay, and this welfare should be nationwide, meaning it should not be concentrated to few individuals. Alright, so हमें पता है these are types of economies, okay? कौन सी types economy में choose करनी चाहिए? So among various economies, Nehru, ठीक है, Nehru was appealed by socialism. Nehru was appealed by socialism. Now हम आगे देखेंगे what is socialism, what is capitalism, and what is mixed economy. But अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि सोशलिज्म में सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में। Okay? So from the different types of economies, Nehru was appealed by socialism, but he was not in the favor of socialism, that he didn't want that all the power, all the property, all the business was in the hands of government. He wanted that there should be some private property also, right? Nehru and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism. Now, two extreme versions have economically, one is capitalism and one is socialism. Socialism हमें पता है socialism क्या है? So socialism is where the majority, okay, the majority is owned by whom? The government. And capitalism क्या है? So everything is left on the market. ठीक है, हमने क्या किया सर, इंडियन लीडर्स एंड थिंकर्स ने क्या किया, जुगाड़ लगाया। ठीक है, एंड दे फाउंड एन अल्टरनेटिव वे, बीच का रास्ता निकाला। हमने दोनों को अडॉप्ट करने की कोशिश करी, टेकिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हमने क्या किया, टेकिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो हमने लाई मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने लाई मिक्स्ड इकोनॉमी। तो in this view, India would be a socialist society with a strong public sector. ठीक है, so there will be a strong public sector which will be overlooked by the government. The government would plan for the economy with the private sector being encouraged to be the part of the plan effect. Right? And upon this, a planning commission was set up, whose chairperson was our Prime Minister, that is Jawaharlal Nehru, and the era of 5-year plan began. Right? तब सर ये डिसाइड किया गया
that every government, ठीक है, in our constitution ये चीज लिखी गई that every government will have a tenure of 5 years, and in that 5 years each government has to come up with a plan, ठीक है, and that plan is now called a 5 year plan, right? आगे हम देखेंगे कि what is a plan, ठीक है, प्लान में जब देखेंगे सर आफ्टर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तब हम एक चीज देखेंगे कि प्लान 5 year plan is a part of a much bigger plan which is called perspective plan, and it has a tenure of 20 years. All right, chali. Now, to choose which type of economy, okay, to choose which type of economy you want, you need to answer these three questions. You need to answer these three questions if you want to know which type of economy you want. ठीक है, सो हमारे लीडर्स, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन लेके बैठे, क्या बनाना, कैसे बनाना, ठीक है, क्या यूज करके बनाना, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, शुड प्रोड्यूसर यूज मोर human labor or more capital means what, capital means machines, and how the distribution of the goods should be brought in. So ये सारे क्या थे, ये सारे क्वेश्चन थे जिनके आंसर करने पे आपको समझ जाएगा कि which type of economy you want, ठीक है. सो हमें ये तो पता है, हमें ये तो पता है that we opted for a mixed economy, ठीक है, बट बाकी दोनों को भी डिटेल में देखना जरूरी है so that we have an understanding. Alright, so one of these answers, okay, one of these answers was given by some market economy that is called capitalism, ठीक है. Only those goods will be produced that are in demand. So सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेंगे, पहला सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन से, द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर इन डिमांड, ठीक है. नाउ if cars are in demand, cars will be produced. If bicycles, सब bicycles, ये क्या, so this is an example, okay. If labor is cheap, ठीक है, if labor is cheaper than capital, so we will use what, we will have labor intensive methods of production and vice versa. हाँ सामने बेटा, ओके. अगर देखिए ह्यूमन लेबर सस्ता है मशीन से, तो हम लेबर यूज करेंगे, ठीक है. अगर मशीन सस्ती है तो हम मशीन यूज करेंगे. सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, राइट, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन, so that is distribution, that is what, that is distribution. Now in distribution there is a difficulty, take if you look from a nationwide perspective, so there is some inequality in what, capitalist society. Why? Because in capitalist society, what goes to produce, how to, yes, these are the, yes I mean these are the questions that we need to answer to determine, ठीक है, to determine what type of economy we should go for. Currently हम capitalist देख रहे हैं. So in a capitalist society, the goods produced are distributed among people not on the basis of what they need, ठीक है, but on the basis of their purchasing power, ठीक है. purchasing power यानी सर how much capable are you, ठीक है, जेब में कितना पैसा है, ठीक है, इसके बेसिस पे क्या होगा ऑन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट. देखिए सिंपल सी बात है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है. हम मार्केट डिमांड को देख रहे हैं. डिमांड तभी होगी जब लोगों के जेब में पैसा होगा, लोगों के जेब में पैसा होगा तभी वो गुड्स प्रोड्यूस होंगे एंड उसी अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
एक्सक्यूज मी सर, ऐसे लोग छूट जा रहे हैं जिनको सर एक पर्टिकुलर गुड गुड की नीड है, बट दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट। ठीक है सर, इन गुड्स एंड सर्विसेज का बेनिफिट सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, या सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, सिर्फ उन्हें मिलेगा जिन्हें जिन्हें सर जिनके पास इनकी परचेसिंग पावर है, जिनके पास क्या है, इन्हें खरीदने की शक्ति है। ठीक है, सिंपल सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो जिनके पास पैसा है, सिंपल, बस जिनके पास पैसा है वही खरीद पाएंगे। ठीक, सो ऐसा सोसाइटी, ठीक है, ऐसी इकोनॉमी was not at all appealing to Nehru. So he was of the view that everybody should have a quality life and no one should be left behind, because कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सर वो लोगों को छोड़ देगी पीछे जो लोगों के पास पैसा नहीं है, राइट? एंड ऑलरेडी देयर वाज सो मच ऑफ डिस्पैरिटी गोइंग ऑन, so adopting a capitalist economy would add up more to the disparity. So second socialist. Now socialist ये तीनों क्वेश्चंस को अलग तरीके से आंसर करेगा। ठीक है, इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, in accordance with the need of society. In accordance with what? In accordance with the need. It is assumed that government knows what is best for the people. ठीक है, what they desire, what is best for them. ठीक है, and according to that they do the distribution also. ठीक है, in principle distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford. Right? Unlike under capitalism, for example, a socialist nation provides free health care. That health care will be to all the citizens and not restricted to those who can only afford them. Strictly, a socialist society has no private properties since everything is owned by the state. Owned by the state means owned by the government. Cuba and China are a much suitable example for a socialist economy. Right? अब हमें socialist economy बहुत अच्छी लगी थी, but we were not of the view that everything should be under control of the government. Government should be only in the control of few important things and the rest should be in the hands of the people, right? So हमने लाई mixed economy, and आज भी majority of the economies are what? Majority of the economies are mixed economy. The government and the market together answers these three questions of what to produce, how to produce, and how should be the distribution. In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market pays to do. ये हमने जब मैक्रो में देखा था, ठीक है, मैक्रो में देखा था, तो ये क्या थे? ये थे, हमने डिफरेंशिएशन देखा था किसमें? पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। तो ये उसी की बात कर रहा है, और ये उसी की बात कर रहा है। फर्दर नाउ व्हाट इज अ प्लान? ठीक है, प्लान क्या है? इट इज just statement which spells out how you should use your nation's resources. Okay, it has some general rules and some specific. Okay, now these are specific objectives है, these have to be achieved no matter what. Importance to all the objectives may be different, but every objective which are specified, okay, which are mandatory, they are they are going to be achieved no matter what. हम हमारा टेन्योर क्या रहता है सर? 5 years रहता है। हमारा टेन्योर क्या रहता है? 5 years रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहलाते हैं? 5 year प्लान, राइट? नाउ दिस 5 year plan is a subset of a perspective plan
ठीक है, which has a much longer tenure of 20 years. चलिए, then what are the goals? ठीक है, goals क्या है? What are the specified goals of 5-year plan? Specified goals of 5-year plan क्या है? Growth, modernization, self reliance and equity. इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका. So specified goals क्या है? GEMS. क्या है? GEMS. सब खाते हैं? Yes. So what is this? These are the specified goals: growth, equity, modernization, self-reliance. Right? Now, the एक चीज जो हमने कही, these are the specified goals. Now, it is not important that every specific goal in a plan will be given equal importance. ठीक है? The priority may differ. ठीक है? Why? Due to limited resources, a choice has to be made in each plan about which of the goal is to be given primary importance. Okay. Nevertheless, the planners have to ensure that as far as possible, the policies of plan do not contradict with our four goals. ठीक है, चलिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं. Growth. What is growth? It refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. It implies either larger stock of productivity capital or a larger size of supporting services like transport and banking. ठीक है, इधर क्या हो रहा है? Either क्या हो रहा है? So either there is increase in the output, ठीक है, either there is increase in the output of goods or services. ठीक है, कैसे भी करके हमें जब आउटपुट एक्सपीरियंस होता है, मच much larger output, हम क्या बोलते हैं? We are in a growth. We are in a growth. Now, growth can be measured through GDP. ठीक है, GDP is a measure of growth. GDP हमें ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बताता है. So consider GDP as a cake. ठीक है, consider GDP as a cake and वो केक का साइज जो है, ठीक है, the size is what? Size is the growth. ठीक है, GDP is what? GDP is the cake and केक का साइज क्या है? केक का साइज है ग्रोथ. राइट. so GDP अगर बढ़ा, if GDP is increasing, अगर केक का साइज बढ़ रहा है, then we'll say that we are in a growing economy. Right. Now, so GDP can come from various sectors. ठीक है, एक चीज हमने देखी थी that GDP contribution से बहुत सारे sectors, be it agriculture, industrial, service, अलग अलग sectors से आता है. And it is to be noted that GDP gives us an overall view. It gives us what? It gives us an overall view. ये हमें इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बताएगा कि what is the individual growth. ये सिर्फ सेक्टर वाइज ग्रोथ बताएगा. ठीक है, कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है. So it is important to note that GDP is not a true representative of what? GDP is not a true representative of what? Of growth, of individual growth. Alright, चलिए. Then modernization. फिर क्या आता है? फिर आता है modernization. Now, modernization is our second specified goal that we need to achieve in each and every plan. Now, the priority that has to be given may differ. ठीक है? To increase the production of goods and services, the producers have to adopt new technology.
ठीक है. When we adopt new technologies, we are we are saying that we are moving towards modernization. We say that we are moving towards what? We are moving towards modernization. ठीक है. So एक modernization का एक outlook क्या है? Modernization का एक outlook है adopting new tech. Alright. और किसे कहेंगे? और किसे कहेंगे कि we are experiencing modernization when our social outlook changes. ठीक है. Social outlook change हो रहा है जब लोगों की सोच change हो रही है when there is improvement in the society. ठीक है. We are moving towards a much better, much quality. ठीक है. Much quality intensive society. हम क्या कहेंगे? Sir, we are moving towards modernization. We are moving towards what? We are moving towards modernization. ठीक है. Then self reliance. Then क्या? Then self reliance. हाँ. सेल्फ रिलायंस आज हमें बहुत सुनने मिल रहा है आजकल बहुत. पीएम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस पे. दैट इज आत्मनिर्भर. क्या बनना? आत्मनिर्भर बनना. दैट इज व्हाट इज सेल्फ रिलायंस. दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. दिस इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. ठीक है. बट जैसे हमने देखा दैट दैट इम्पोर्टेंस विल डिपेंड कब ज्यादा देनी है. ठीक है. A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. The first 7 5-year plans have given importance to self-reliance, which means avoiding import of those goods which could be produced in India itself. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries. ठीक है. Because we have been recently freed. Guys, देखिए क्यों self reliance क्यों important था? Because we have been recently freed. And अगर हम वापस से क्या हो जाते, वापस से अगर डिपेंडेंट हो जाते फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पे, so indirectly we we were again becoming slaves of foreign countries. ठीक है. So it was very important that हम क्या रहे सर? आत्मनिर्भर रहे. And then equity. Now सर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये सब के साथ साथ एक चीज होना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाट? दैट इज इक्विटी. लोगों के बीच क्या रहना चाहिए? इक्वालिटी रहना चाहिए. ठीक है. सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. ठीक. It should not happen that rich are becoming richer, poor are becoming poor. The benefit of a plan should should be to each and every person. The benefit of a plan should reach to each and every person. Right? बढ़िया. Then let's see. देखते हैं हर एक सेक्टर में. ठीक है. हर एक सेक्टर में how did a 5-year plan has been working and how the 4 goals have been achieved. Right. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, we'll be looking at in a very brief manner because the revision है. ठीक है. अब एग्रीकल्चर सेक्टर में so there was downfall, there was stagnation. ठीक है. So downfall था, stagnation था due to various reasons such as low level of technology during the colonial rule. So inadequate knowledge for the use of fertilizers, pesticides, and lack of irrigation facilities. ठीक है. And on top of all this, the zamindari system.
ठीक है. there was no efforts taken by there were no efforts taken by either the zamindars or or by the colonial government to improve the condition of people who were engaged into agriculture sector. ठीक है. सो हमारे लीडर्स के सामने सर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था. दैट इज टू ब्रिंग आवर एग्रीकल्चर बैक ऑन इट्स फीट. एंड वो करने के लिए सर इन्हें ये दो चीज़ों को हटाना था. ठीक है. दैट इज सबसे पहला जमींदारी सिस्टम एंड दूसरा सर जो भी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज थे, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी. ठीक. वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी. हमें क्या क्वालिटी बढ़ानी थी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की. सो सो हमने सर दो चीजें लाई. we we brought land reforms and we brought green revolution. We brought land reforms and green revolution. ठीक है. now land reforms में ठीक है land reforms में हमने क्या किया. हमने abolish किया सर इंटरमीडियरीज को, हमारे जमींदार को, हमारे जागीरदार को. ठीक है. बिकॉज दे वर जस्ट कलेक्टिंग टैक्सेस. ठीक है. सर रेंट सिर्फ कलेक्ट कर रहे थे एंड वो पे कर रहे थे किसे. they were paying to the colonial government. Now this was okay, but what what was the worst part of the zamindari system? That it never helped. It never helped the tillers, the cultivators. Okay, they were just there. They were just there to collect rent. Okay, so this system, the intermediary system, had to be abolished. Okay, and because of this zamindari system, our produce has gone so low during that time that we had to import food products. Okay, our food grains, food crops from where? From US of A. From where? From US of A. Okay. So हमने क्या किया सर. हमने डिसाइड किया that under land reforms the ownership will be transferred. The ownership will be transferred to the tillers. ठीक है. हमने क्या किया. हमने ओनरशिप चेंज कर दी. हमने ओनरशिप दे दी किसे. हमने ओनरशिप दे दी सर हमारे कल्टिवेटर्स को, हमारे फार्मर्स को, हमारे टिलर्स को. ठीक. बिकॉज ओनरशिप दिया तो एक इंसेंटिव मिल गया उन्हें टू इन्वेस्ट एंड टू यूज प्रॉपर टेक्नोलॉजी. Now, under the same land reform, there was another policy that also needed. That was land ceiling. Now, land ceiling को समझने का बहुत ही सिंपल तरीका सर. आपका रूम का एक सीलिंग रहता है. आपका क्या रहता है. आपका रूम का एक सीलिंग रहता है. वो रूम का सीलिंग क्या सर एक लिमिट लगाता है कि हाउ टॉल द रूम कैन बी. ठीक है सर. एक्सक्यूज मी कितनी हाइट हो सकती है रूम की. ठीक है. सो उसी तरीके से लैंड सीलिंग. एक्सक्यूज मी सॉरी गाइस. लैंड सीलिंग क्या कर रहा था. लैंड सीलिंग लिमिट लगा रहा था ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड दैट एन इंडिविजुअल कैन ओन. ठीक है. इससे क्या होगा. इससे सर इक्वालिटी मेंटेन होगी. इससे क्या होगी सर. इक्वालिटी मेंटेन होगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड will be equal. Okay. So due to this, around 200 lakh tenants, 200 lakh farmers and cultivators came in direct contact with government, and freed them with the zamindari system. Now, so ये सब रिफॉर्म्स आने के बाद भी there were some loopholes. ठीक है.
लोग क्या करने लग गए, लोग क्या करने लग गए सर, उन्होंने इस इस लेजिस्लेशन को चैलेंज किया, ये चैलेंज किया कोर्ट में। एंड उससे उन्हें थोड़ा टाइम मिल गया, एंड उस टाइम में क्या किया सर, उन्होंने अपना लैंड अपने रिलेटिव्स के नाम कर दी। बिकॉज आपने क्या कहा था, मेरे नाम पे इतनी लैंड नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है, मैंने रिलेटिव को दे दी इनडायरेक्टली, वो है तो मेरी। So, सर ये सबसे क्या, देयर वाज स्टिल सम इनइक्वालिटी, ठीक है, बट मेजोरिटी लोगों को बेनिफिट जा रहा था। एंड स्टेट्स ऑफ केरला एंड बंगाल, सर दे वर कमिटेड एंड दे abolished systems, and an an equal share was given to each and every farmer. Then ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, सो दैट क्या इम्प्रूव हो, सो दैट हमारे क्रॉप्स की हालत इम्प्रूव हो। सो वी स्टार्टेड यूजिंग हाई yield productive, high high yielding variety seeds, ठीक है, we started using high yield variety seeds with 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 proper irrigation and use of fertilizers and pesticides, ठीक है। This was collectively called what, the green revolution technology, ठीक है। अब सब पहले ये सब पहले ये नहीं पता था लोगों को कि क्या यूज करना चाहिए, कौन सा सीड यूज करना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स, सब कौन से irrigation facilities, ठीक है, because people were not able to afford all these things। मेजोरिटी मेजोरिटी लोग किस पे रहते थे, वो सब मानसून सीजन पे, they were dependent on what, they were dependent on the monsoon। अगर बारिश नहीं आई तो क्या, yeah, so we needed some changes in our agriculture, ठीक है, in our agriculture sector। So green revolution came in, ठीक है, and under green revolution we were introduced to high yield variety seeds। सर ऐसे बीज यूज करो, ऐसे सीड यूज करो जिससे सेम सेम इनपुट से आपको क्या मिले, ज्यादा आउटपुट, राइट। एंड इनिशियली सर दो फेजेस में काम हुआ, ठीक है, दो फेजेस में काम हुआ इनिशियली। सर पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में फर्स्ट फेज इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। सेकेंड फेज में फर्दर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स को इसका बेनिफिट दिया गया, ठीक है। नाउ एज आप प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, ठीक है, as the production increased, so we were now less dependent and we were becoming more self-reliant। then जो ये जो भी सरप्लस रहता था, ठीक है, जो भी सरप्लस रहता था उसे फिर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब देखिए मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, सप्लाई बढ़ गया चीज़ों का, क्या बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, फूड फूड ग्रेन्स का सप्लाई बढ़ गया। अगर कोई चीज़ का सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइसेस क्या हो जाती है, प्राइसेस कम हो जाती है। हाँ, जो लो इनकम लेवल वाले ग्रुप्स थे वो भी इस चीज़ से फिर बेनिफिट कर पाए, राइट, बिकॉज प्राइसेस कम हो गए एंड they could afford they could afford spending on food grains। And also along with that, the government also started building up stock of such food grains in case there is some shortage, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम अगर कभी सब फूड ग्रेन्स कम पड़ गई तो गवर्नमेंट विल बी देयर टू प्रोवाइड यू विद दैट। सिर्फ एक रिस्क, हाँ सर एक रिस्क था, दैट इज व्हाट, that is this green revolution technology, again that was this green revolution technology। this was this was expensive, it needed capital। so government ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको क्या देंगे सर, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, आप क्या करें सर, आप ये टेक्नोलॉजी यूज करके, छोटे फार्मर्स को बोला गया, ठीक है, छोटे फार्मर्स को बोला गया आप ये टेक्नोलॉजी यूज करो, आपको साथ ही साथ क्या मिलेगा, लोन भी मिलेगा कम रेट पे और सब्सिडीज भी मिलेगी। इससे क्या हुआ, इससे सर एक इक्वालिटी आई इसमें बिटवीन द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स, राइट।
हाँ, सर जो सब्सिडीज दी जा रही थी, ठीक है, जो सब्सिडीज दी जा रही थी उन पे क्या होने लग गए, उन पे डिबेट होने लग गए, बिकॉज द डिबेट ऐसा था कि जो भी वो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ठीक है, फार्मिंग के लिए, उसे सब्सिडी मिलेगी। बट बट इसका इसका दुरुपयोग होने लग गया, मिसयूज होने लग गया, ठीक है। कैसे? बिकॉज सर जो बड़े फार्मर्स थे उन्हें जरूरत तो नहीं थी, बट स्टिल वो क्या करने लगे, सर वो भी इस चीज का फायदा उठाने लग गए, ठीक है, विच वॉज नॉट रियली नेसेसरी। सो अंडर दिस डिबेट, ठीक है, अंडर दिस डिबेट, सब आखिर में बेनिफिट किसे दिया गया? आखिर में बेनिफिट दिया गया सर ओनली टू द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है, अब आ जाते हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड पे। इकोनॉमिस्ट has economists have found that poor nation can progress only if there is a strong industrial base. Industries provide employment which is more stable than employment in agriculture. It promotes modernization and overall prosperity of the nation. It is for this reason that five-year plan placed emphasis on industrial development. You might have studied in a previous chapter that at the time of independence, the various industries was very narrow, largely cotton and jute. Okay? There were two well-managed iron and steel, one in Jamshedpur and one in Kolkata. सर ये कौन चला रहा था? ये टाटा चला रहे थे, टिस्को, ठीक है। But we obviously needed to expand, ठीक है, to grow. अब before the independence this was not possible, ठीक है, ये possible नहीं हो रहा था। क्यों? क्यों नहीं हो रहा था? Because our colonial government was not allowing us to establish a second base, ठीक है। Public sector and private sector in India and in industrial development. So, what was the role of public sector and private sector? The big question facing the policymakers was what should be the role of government and the private sector in industrial development. At the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development, nor was the market big enough to encourage the industrialist to undertake such major projects. See, it is principally for these reasons that the government had to play an intensive role in promoting the industrial sector. In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the government controlling the commanding heights of economy. As the second five-year plan, see, this meant that the government would have complete control over these industries that were vital for the economy. The policies of private sector would have to be complementary to those of the public sector, ठीक है। बिकॉज देखिए इनिशियल क्या हो रहा था, इनिशियली ना ही मार्केट था, ठीक है, इनिशियली ना ही मार्केट था, ना ही लोगों के पास पैसा था उतना, ठीक है, ना ही मार्केट था ना ही पैसा था कि सर जो एसेंशियल एसेंशियल इंडस्ट्रीज है उसे खड़ा करे। सो इसकी भाग दौड़ किसने संभाली? इसकी भाग दौड़ संभाली सर गवर्नमेंट ने। किसने? पब्लिक सेक्टर ने। एंड जो भी पॉलिसीज बनने लगी वो उसके अकॉर्डिंग बनने लगी, ठीक है। In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy revolution was adopted. This revolution formed the basis of the second five-year plan, the plan which tried to build the basis of socialist pattern of society. This this revolution was categorized into three categories. Okay?
This revolution categorized economy in three categories. The first category comprised industries which would be exclusively owned by the government. The second category consisted of industries in which the private sector could supplement the efforts of the public, while the government taking the sole responsibility from starting a new sector. The third category was that the remaining industries were in the private sector. ठीक है, पूरा कंट्रोल किसे प्राइवेट सेक्टर में. Although there were a category of industries left to the private sector, the sector was kept under state control through form of licenses. ठीक है, अब even though यहाँ पूरा खुला हाथ दे दिया था, but still license का need था. Okay, to run industry you needed a license. अब सर इस लाइसेंस का भी कुछ बेनिफिट्स थे. ठीक है, आपको जैसे टैक्स रेट में कंसेशन मिल जाता था, इलेक्ट्रिसिटी कम रेट में मिल जाती थी. ठीक है, इन इफ यू आर एस्टैब्लिशिंग अ इंडस्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया. अब इस चीज़ का भी लोगों ने फ़ायदा उठाया. एंड सर क्या किया, सर इसे भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. ठीक है, चलिए, that's it for this revision. ठीक है, this was a quick revision. आपने एक चीज़ अभी ध्यान रखनी है. ठीक है, सेल्फ स्टडीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट. हमें पूरा ध्यान देना है किस पे, सेल्फ स्टडीज पे. और कहीं भी थोड़ी सी भी हमें छूट नहीं देनी है. कभी भी हमने क्या नहीं होना है, लीनियंट नहीं होना है हमारी पढ़ाई को लेकर. नेवर गेट लीनियंट. आज संडे है, आज रहने देते हैं पढ़ने को. ठीक है, आज संडे, आज रहने देते हैं पढ़ने को, कभी और पढ़ लेंगे ना. डोंट एवर गेट लीनियंट, बिकॉज सर 1-2 महीने की बात है, फिर एग्जाम्स आ जाएगी. एग्जाम्स के बाद यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, एग्जाम्स के बाद यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है गाइस, चलिए, नाउ जस्ट रिमेंबर. ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर है, आप ऐप पे इफ यू आर गोइंग टू वॉच एनी वीडियो, ठीक है, ऑफ अ स्पेशल क्लास, आपको क्या बोलेगा, सर यू नीड टू एंटर एन इनवाइट कोड टू अनलॉक द फ्री कंटेंट. सो आपने क्या, सर ये SAJYT इसे यूज करना है टू अनलॉक व्हाट, टू अनलॉक द फ्री कंटेंट. यू नीड टू अप्लाई दिस कोड. जहां भी पूछे आपको ये कोड अनलॉक करने के लिए. ठीक है, फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए ये कोड लगाना पड़ेगा, SAJYT. यही कोड से आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज़ेस. यही कोड यूज करके आप हमारे क्विज़ेस भी अटेंड कर सकते हैं. राइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. Do subscribe to the channel. Alright, do subscribe to the channel and don't forget to hit the bell icon so that you are notified every time we go online. Alright, thank you so much guys. And जाते जाते एक reminder, sir, हमारा कोड, ठीक है, SAJYT. क्यों सर, वापस क्यों? Because 10% discount on each and every subscription. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आपसे कल मुलाकात होगी. कल हम से नया चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. आपसे जल्द मुलाकात होगी. ध्यान रखिए अपना और अपने घर वालों का भी. टेक केयर गाइस.